मैं डॉक्टर एस.एम. राजू, IAS ऑफिसर फॉर्मर। मैं सर्टन हर्बल कॉम्पाउंड्स इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए इन्वेंट किया गया है। उसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और कैंसर के भी है, और इन डिसीजेस के लिए और ओबेसिटी के लिए मैं अनकुक्ड डाइट में बोलता हूँ। ये अनकुक्ड डाइट का मतलब दिमाग खराब हो जाता है। अभी ये डिनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको मखाना सलाद, ये डिनर भी ले सकता है और लंच भी ले सकता है। मखाना, रोस्टेड चिकपी, पीनट्स, कोरिएंडरम, ग्रीन चिलीज, लेमन, ड्राई कोकोनट, ऑनियन, टोमेटो, ब्लैक पेपर पाउडर, salt. Preparation is very simple. We have to take all these ingredients. अभी रेशियो मखाना ज़्यादा रहेगा, ये सब कैसा क्वांटिटी चाहिए ऐसा मिक्स करके आप एंजॉय कर सकते हैं। Now I am going to mix all these ingredients which I have told you. This makhana should be very crispy. So I am adding major portion is makhana, 30 to 40%. And this roasted chickpea without oil, 2 tablespoons, and roasted peanuts without oil, 2 tablespoons, tomato, 2 tablespoons, onion, 2 tablespoons, and dry coconut chopped one, 2 tablespoons. Now I am adding black pepper. Here you can add even chaat masala also. Green chilies according to your taste, and salt according to your taste you can add. Lemon, if at all you require, you can use half a lemon or 1 lemon for the taste. Now let us mix it everything. अभी मैं जो बताया था सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स किया, एंड इतना सुंदर है देखने के लिए, एंड आप टेस्ट करो तो ही मज़ा आता है। यू रियली एंजॉय इट। एंड इवन किसको पेट कम करना है, किसको मतलब ट्रिम होना है, स्मार्ट होना है, उन लोगों को भी ये डाइट फॉलो कर सकता है। एंड इतना एनर्जी आएगा यू कांट इमेजिन, क्योंकि मखाना आई एंटीऑक्सीडेंट्स का रूप में आ जाता है। उसमें रिच प्रोटीन्स है, क्योंकि मूंगफली में है और चना में है। आपको मालूम है चना में मोर देन 20% है, मूंगफली चना में। और उसके बाद में नारियल में तेल है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तेल है। सो होलिस्टिकली बैलेंस्ड डाइट आपको डिनर में मिल सकता है, इसको लंच भी ले सकता है।